new yesterday? Okay, so yes, there were 60 supposed to join, right? So shall we start with the session or should we wait for someone? Ma'am, there are more students to join. Okay, so we can wait for 5 more minutes, yeah? Will that work? Yes, ma'am. Okay, so by the time if you have, you have any doubts regarding the yes, this session, regarding your thesis or something that regarding the research methodology or how to, write your synopsis, how to write research paper, anything if you wanted to ask, you may. Ma'am, I have a question. मैम अगर Yes, please. मैम, हम लोग जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे अपना, तो ठीक उसकी है. फिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि हम लोग जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है? Okay, fine. See, topic initially when you start your thesis, na, everybody is so excited and everybody wanted to do all the things new. They want मेरी research बिल्कुल exclusive होनी चाहिए, that no one have done so far any on that particular topic, right? But and that's how in this particular thing sometimes we choose the very fancy kind of topic. So first we choose that topic and then it will become a liability for us because we won't be able to finish it. So my submission here is you have to go for data availability first. Will the data be available or not? Because even if you have done everything, you won't be able to collect the data. Then it is going to be a problem. Right. Ma'am, are you talking about the primary data or secondary data? That will depend upon what kind of data do you need for your study, because every study requires different kind of data. So do you want, let's say I am doing I wanted to do some research and my respondent should be the top level manager. I wanted to see the strategy of the company. So strategy, maybe I may do analysis of the strategy with the help of the annual reports where the strategies are being written, or I wanted to do this research with the help of the primary data. So if you wanted to do this research with the help of the primary data, then you need the responses from top level manager, not the employees of the company. Then do you have the links? Will you get that data from the top level management? You should see the feasibility of that also. Except, of course, money and resource, how much resources do you have? These are all less things. But the first and very important feasibility is whether the data will you be able to collect the data? Do you have contacts? If you have the contacts, you can easily go ahead. No problem. तो मैम, अगर हम लोग एक टाइप का ही डाटा कलेक्ट करेंगे, सपोज सेकेंडरी सोर्सेज से ही करते हैं, तो हमारी रिसर्च कितनी रेलिवेंट होगी? Depend. See, if I wanted to do the analysis of the economic growth, ठीक है, तो मुझे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना चाहिए या सेकेंडरी? बोथ सोर्सेज. प्राइमरी, क्योंकि आप किसी से थोड़ा ना पूछोगे कि मेरे व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. No, you will see the reports, what the data says. So that will depend upon the topic. What kind of the data do you require? It is not only, see, there are a lot of, especially in finance and economics, almost all the studies are based on the secondary sources. In marketing, in HR, lot many studies are on the primary sources. So it will depend upon the topic, what kind of data do you require. If I told you my whole the thesis is based on the secondary data only, because I did my research in the area of finance and it was not a perceptual study. Yes.
I'll just I just give you a little clarification. If I say you wanted to analyze the investment behavior of individual, right? Then, or investment behavior of any company, investment strategies of any company. So one thing you may ask कि आप कैसे invest करते हैं. The second thing, you see their portfolio, how they are investing. So if you ask them, they will not give you the correct data. If you ask from any company, definitely this is very, this financial data cannot be disclosed. Confidential है तो वो disclose नहीं करेंगे. Moreover, if you ask something, they will not give you the relevant data. Then you can only do the perceptual study. But if you need some concrete data, you have to refer secondary data. So that will depend upon the type of the study. Dr. Mohit, are you here? Ma'am, sir has left. Oh, okay, fine. I think sir saw that I had already started the session. Yes. Ma'am, can you please rotate your screen because it is coming horizontally? I'm just going to actually close my video, because else the problem will be with the network, because now I have to share my screen only. If the Dr. Mohit is there, could you please call and then ask, can we start with, or should we wait for some more participants? Okay. I hope we should go ahead now. Yes, ma'am. Okay. Can somebody is here who can call to the Dr. Mohit and just ask, should we wait for more participant or we can continue it? Because I guess it is already 1:45. मैम लगभग इतने पार्टिसिपेंट रोज होते हैं 50 के आसपास हैं इस समय और आप शुरू कर सकती हैं मैम. Okay, fine. Thank you. Now somebody is, I just request everybody to please kindly mute yourself unless you wanted to ask something. If you wanted to ask something, you can unmute yourself and, give, you may ask the question. But by the time there is something, Mr. Shahu, I request you to please mute so that we can start the session. Okay, fine. Thank you. So as we left yesterday, in continuation, we have covered yesterday what is meant by research, what are the types of research, like when you wanted to, continue with your research, maybe a PhD degree, or you wanted to write your research paper, you should know what is the basic concept of research. Then you wanted to see what kind of the research, what kind of different types of researches are there on the base, because you have to take a decision whether your research is, exploratory or a descriptive. Was accordingly you have to decide the research method. So then it is your research design. Fine. So research design, and then you have chosen the research method. So let us see. Okay, we have Bindu. I have selected a topic, and then on the basis of the topic, we found there are a lot of literature is there. So I choose, okay, this will be a descriptive kind of research. So for descriptive kind of research, now I chose method, that is questionnaire. So I went with data, I'm planning to go with the data collection with the questionnaire method. Now the next question comes, what will be the next problem, or what will be the next issue with this? Sample. With whom I have to collect the data? Who will be my respondent? As I said, for selection of the topic, even before selecting the topic, you should know who will be your respondent. To whom I have to approach to collect my data, to get the result. So the next thing, which is very, very important for a researcher, that is
sampling methods. And almost all the researchers generally are very much confused about what kind of the sample they are using it. Just because they wanted to apply some kind of test, and that's why they wrote this will be a probability sampling, or this is a non-probability sampling, this is this, or everybody write that this is a random sampling. As I've seen lot many, thesis also, because when thesis comes to us and then we'll do the checking of that thesis, and then it shows, oh, everybody wrote it is a random sampling. Though when we gone through with the rest of the things, we found, oh, there is nothing like randomness. And moreover, when they decide sampling, there is no justification for that. Even just coming from a Viva would say. So the all went very well. And then the expert asked again a single question from the person: why did you write your research as exploratory? Though of course the research was exploratory, but the researcher fails to explain. That student failed to defend the thesis, because one side he is writing that research is exploratory, and to the other side he is writing few hypotheses. And then the lot many questions about the sample size. Why did you choose 300? Why did you not choose 350? Why did you not choose 500? What strategy did you adopt for the sampling method? What is the justification? And almost all the researchers fails to address this question. They and that's why the sampling is very, very important, because this sample is actually going to affect your final result also. Let's say you wanted to, somebody asked yesterday also, if I do not get what I expect, if my hypothesis negate, or I accept my hypothesis rejected, then what do I do? You should see the reasons, whether your sample size is appropriate or not. Because if your method of sampling is wrong, then your result may not come what you expect. This is called sampling error. Either you chose a wrong sample, or your sample size is very less, or your strategy that you adopted for choosing of a sample, that is wrong. And then despite of you did lot many efforts for 3 years, you failed to produce a good quality result. And now, as UGC is saying that everybody has to publish its research either in the UGC careless journal or maybe Scopus. We in the university, we will not recommend the UGC's normal list journal. We recommend, okay, all the scholar has to publish only in the Scopus list journal. Then only then only we are accepting that, okay, there is some quality at least, because the paper is published in Scopus list of journal. So when you are going to publish your paper, then your paper may get rejected because of this sampling issue only. They'll keep asking so many questions that your sampling is not correct. You should understand what is the sampling, how to decide what will be my sample size. That's why this is very, very, very important topic. And as somebody asked initially in the very beginning this question, how should I choose my topic, and how should assess the feasibility of my topic? So one is of course data, and another is the time period. How much year do you want to devote to your thesis? Do you want to complete your thesis within 10 years? Then you can take such a very big topic, very in depth, no problem. But do you want to pursue your research within this 4 year only, 3.5 year or 4 years? So accordingly your topic should be, and accordingly your sample selection should be. Right? So that's how this is very important. So can somebody tell what do you mean by sample, or is it actually important or not? Anyone of? Yeah. Am I audible to you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. You Oh, are audible, okay. but your question, please pardon Okay. your Okay. question. Okay. My question is, what do you understand by this sampling method? Why this sampling is important? Do you really think this sampling is important? Or what part of your thesis will be affected by this sampling method?
Ma'am, this is Somnath. Yeah. Uh, I would like to say that sampling is very important part of any thesis, any writing, because it is eventually the sampling that will decide whether our results are right or not. Okay. Because sample will represent the population that we are going to study, and whether we are making a proper representation or the results are properly representing the effect of our variables in the population is finally decided by the study we do on the sample only. Thank you, Somnath. So as Somnath said, yes, of course, the final result will depend upon the type of the sampling. Yeah, Okay. ma'am, I'm Ekta, and I want Yes, to Ekta. say sampling is a one method. How can we collect my data? If we Okay. choose the wrong sampling, so this is impact overall research, overall Okay, fine. thesis. So first of all, Okay. we have to choose right path for a sampling, which types of data choose for which thesis. So this is very important decision for a sampling. Okay, okay, fine. Agreed. Okay. One more point I just wanted to add here is that both Ek and Somnath has well explained the sampling. Just a little addition. What you do after analysis of the data? मैंने just little I was curious about. Okay, you did your sampling. You did your sampling means you wanted to collect the data, right? So you have collected your data. What do you wanted to do next? मैम मैं आई Yeah. Yeah, yes, please. मैम ये डिपेंड करता है। पहली बात, जैसे पहला क्वेश्चन आपका था सैम्पलिंग मेथड का, तो मेथड ये डिपेंड करता है हमारा टॉपिक कैसा है और उसके अकॉर्डिंग हमको मेथड चुनना पड़ेगा। हर मेथड हर टॉपिक के लिए उपयुक्त नहीं होते। और फिर आपका ये जो दूसरा प्रश्न है कि आंकड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम डाटा जब इकट्ठा करने के बाद उसका विश्लेषण करते हैं, हमको क्या जानना है उसके अकॉर्डिंग विश्लेषण करने के बाद उससे हम उस पर फाइंडिंग निकालेंगे, तब जाके हम लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या वो डेटा हमारे हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो क्या कंडीशंस थी। तो हमारा जो रिसर्च का मेन जो थीम है वो इस डाटा के बेस पे निकलता है। फाइंडिंग जो है। Right. Okay, fine. Thank you. Okay, so is there any relation between this data analysis method and sampling also? When you decide, I guess, see, when will you prepare your synopsis? You have to write something about your research methodology also. That what kind of the sampling are you going to use? What will be your sample size? What kind of methods are you going to use for the analysis? If you know before, and sometimes you have to give that data also in your synopsis. So is there any relation between data or once you get the data, पहले आपने data collect कर लिया and then you sit कि okay, now my data is with me, now let me see कि मैं क्या लगा सकती हूँ. Should I use chi-square? Should I use t-test? Should I go for IMOS or EFA or CFA plus? And of course, there are lot many standard techniques are there. वो कहाँ कैसे आएगा वो? Is there any relationship? Yes, ma'am. Sampling you decide early. So what? Yes, ma'am. इनके बीच रिलेशन होता है और जिस ढंग की जरूरत होती है उस ढंग के अकॉर्डिंग हम लोग को टेक्निक लगानी पड़ती है कि हर जगह जहाँ टी टेस्ट लगना होगा वहाँ काई नहीं लगेगा। तो इस ढंग का हर एक टेस्ट का हर एक चीज का एक अपनी पर्टिकुलर विशेषता होती है और उसी के अकॉर्डिंग लगना होता है। और सिनॉप्सिस के समय ही हमको ये देखना होता है कि हमारा किस ढंग का टॉपिक है, उस पर किस ढंग का डाटा है और कैसे एनालिसिस करके हम क्या, यही पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाएगी मैम कि हम कैसे करेंगे उसको। ठीक, अच्छा तो क्या होनी चाहिए फिर? रिले है कि अगर आपको टी टेस्ट लगाना है तो आपको काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है तो आपकी सैम्पलिंग मेथड क्या ऐसा कुछ है? और आपको एमओएस के लिए जाना, यू वांटेड टू यूज स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग और डेटा आपकी सैम्पलिंग मेथड होना चाहिए। Yeah. Understood my question? Yes, please. If you understood the question, please. I don't know whether you understood or not.
as you said ना, I guess Samir has explained ना कि आपको ये पता होगा कि आपने का स्क्वायर लगाना है, आपको टी टेस्ट लगाना है. But is there any relationship between this chi-square test or sampling also, और टी टेस्ट और सैम्पलिंग ऑल्सो, कि मेरी ये सैम्पलिंग है तो मेरा टेस्ट ये होगा? इज देयर एनी रिलेशन, या मैं कोई भी मेथड यूज कर लूं और फिर हम बाद में कोई भी वो यूज कर सकते हैं? वो उसका जैसे हर टेस्ट की अपनी शर्तें होती हैं, वो उस पे उस पैमाने पे अगर सैम्पलिंग डाटा सेटिस्फाइड करता है तभी वो टेस्ट लगेगा. ओके, राइट. सो एज see, so this is again, of course, that's how I wanted to throw light how sampling is it important even for deciding a type of the method that you are going to for the analysis of the data. This will further depend upon my sampling method. Is it our probability sampling or is it non-probability sampling? If I have to use a MOS, what kind of my sampling method? So all these things are very much depend upon the sample. So that's why we are going to, I just want, that's why we are just going to cover a big topic. Not just for theoretical that you should have understanding, you should also know the application part of this. And theory, so I know everybody knows what is stratified random, what is simple random, what is random sampling, cluster. I guess theory wise आपको पता है, but you should know also the applicability. If my topic is this, what type of sampling should I use? Right? So this will be the learning objective of the day. We'll cover up about the sampling. Why do we do sample? What are the different methods of sampling? What is the difference between probability and non-probability sampling? And then relative advantages and disadvantages of the sampling method. Right. So as of course, sampling is a smaller unit of a population. So let's say if my population is managers of all the government banks, then one single manager is the number of managers to which we approach for collecting the data, that will be a sample. Now this is our decision. We may go for sampling or we may go for population also. So as one definition which is given by Field in 2005, very important definition. I personally like this definition very much, that sample is a smaller but hopefully representative collection of unit from a population used to determine the truth about the population. What we say? Collection of unit, and then of course it should represent the population. So if my population is very homogeneous, let's say I wanted to ask about the consumer preference about this this social media site, and I wanted to take the opinion of the only youth, and to the youth to whom I am targeting, that all the youth falls in the age group of 18 to 25 only. Fine. So everybody is in the age of 18 to 25. There is a homogeneity. Age wise sub homogeneous hai. Everybody is youth. Fine. So even a small sample will work. But if my population is very much heterogeneous, fine. In that case, if my we should see what now we should go for a large size of the sample. So that's why it is written here. Sample should representative of the population. I'm starting another example here. Let's say you wanted to analyze the class performance of the student. How will you analyze it? Students out of this class, and luckily all that 5 students have the very good marks, then we'll say every student is performing very well. Or I may approach to only those students who got very less marks. Shilpi, request, please mute yourself. Then what conclusion we can draw? That all the students are not performing well.
So we have to see the heterogeneity of the classes also. How much male is, and or maybe we just ask the question to the male member only or to the female member only, right? So how much your population is heterogeneous or homogeneous. एक तरीके की population है, then we can ask the same question from 3 or 4 people and we may come to a conclusion. Okay, everybody is thinking like this only. But if the population is a mix, there's a lot many heterogeneity in terms of age, heterogeneity in terms of gender, fine, heterogeneity in terms of their income group, heterogeneity in terms of their education. That's why we have demographic profile लेते हैं. Why? Because we wanted to see how heterogeneous our data. Because when you have to justify your sample size, you have to see why your sample is this much. Why are you taking this 500 sample? Why not take 100? Why are you taking this 500 big sample? Because your some population is heterogeneous. Or why are you taking a small sample? Because it is homogeneous. सब एक सेम एज ग्रुप के हैं, सारी फीमेल्स हैं, फाइन, एंड एवरीबडी ऑलमोस्ट फॉल इन द सेम एज ग्रुप, सेम इनकम ग्रुप, सेम एजुकेशन. सो वी कैन थिंक ओके 15 और 20 लोगों से पूछेंगे तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट. अगर आप 100 लोगों से पूछोगे और 15 लोगों से पूछोगे, द रिजल्ट विल बी सेम. So that's how we should decide, should we go for population or should we go for sample. And that's how this written. Why sample? Why not population? If population is very, very small, let's say in one particular class, only 40 students are there. You have enough time, you have one whole hour, then you can ask individually. Like, I wanted to take the feedback, whether how much is your level of understanding about the sampling. So here 58 students are there. I have to cover the whole this topic what I'm planning to, and this time is limited. That is 1 hour duration only. Now from now it is just 1 hour duration, because before 3 we have to finish it up. So I cannot take the I cannot ask this question for all these 50 students. So that's why what should I do? I have to go for sampling. I should choose 3 or 4 students. Maybe randomly I can ask, and they may volunteer and ask or give the responses. Or I may ask, okay, you tell and you tell and you tell. So it will depend upon sample. Should you go for sampling or should you go for whole population? That will depend upon the resources, how much time and money you have. If you have enough resources, you have enough money, you can travel everywhere, you can collect the data, then you can go with the population. Or you have enough money also. And then your workload, you are free. If you are free, then you can collect the data from lot many people. See, there are a number of the research organizations who are collecting the data only. Their primary job is to do the survey only, like Nelson. So if somebody like CMI, so what if somebody wanted to do a survey, they just give the job to Nelson, and then Nelson do the survey on their behalf. Because Nelson have enough time and money, they are only doing this work. So how much workload is with you? That will also depend upon, should you go for population or should you go for sample. The second, given result with known accuracy that can be calculated mathematically. When you are doing with the sampling, you should know that your sample should be complete representative of the population. If it would not represent the population, then there is something wrong with sample. Or you should, if the population is so very heterogeneous, everyone have a different kind of, will not do sample, you have to go for the population. Or maybe your population is very small, maybe 10 लोगों का, 20 लोगों का, 30 लोगों का, then you can ask individually. So this is one. Why should we do sample? Now, when the sampling is there, or when you have to write this, I wanted to do more focusing on how should you prepare a synopsis. So when you have to prepare a synopsis, you have to write what will be your target population. What will be your population, like target population. So target population means with whom we have, for whom I wanted to generalize my research. So let's say if I'm doing this, research for banking industry, then all these banks will be my population. Or all these bank managers, employees, everybody is my population.
Then the next comes to sample. Once you're done with sampling, the next very important question, sampling frame. When you decide about what kind of your sampling, should you go for probability sampling or should you go for non-probability sampling? That will further depend upon, do you have the sampling frame? So can somebody tell what is sampling frame? Yes, please. मैम आप नहीं क्लियर नहीं है सैम्पलिंग फ्रेम किसे कहते हैं. अच्छा ठीक है, तो ये दिस आंसर आई लाइक. अगर आपको क्लियर नहीं है, फ्रैंकली सेट नहीं पता है, ठीक. सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स मेरे पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, क्या उनके नाम, पता, फोन नंबर, ये सब मेरे पास है या नहीं. सो लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स इन दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम. लेट्स से आपको एमबीए का डेटा लेना है, एमबीए थर्ड सेमेस्टर का. तो एमबीए थर्ड सेमेस्टर विल बी योर पॉपुलेशन, क्योंकि आपको एमबीए थर्ड सेमेस्टर से डेटा लेना है. अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? लिस्ट ऑफ नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग इन एमबीए थर्ड सेमेस्टर. उस एमबीए थर्ड सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उन सबकी पूरी लिस्ट अगर है, तो दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम. क्लियर समीर? मैम क्या तो पॉपुलेशन भी तो यही हुआ ना फिर? पॉपुलेशन लिस्ट नहीं है. पॉपुलेशन इज मीन्स लेट्स से यू आर डूइंग ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री, सो बैंक विल बी योर पॉपुलेशन. सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? सैम्पलिंग फ्रेम इज उन सारे बैंक्स के नाम लिस्ट वाइज. ओके, आई एम गिविंग अ वेरी वन मोर इम्पोर्टेंट एग्जांपल कि सैम्पलिंग फ्रेम की जरूरत क्यों है. जब आप कह रहे हो कि पॉपुलेशन भी यही है, फिर सैम्पलिंग फ्रेम की जरूरत है. लेट्स से आई एम डूइंग वन रिसर्च ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया. ठीक है, मुझे ये स्टडी करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल इंडिया में कितना है. तो पॉपुलेशन क्या हो गई मेरी? रूरल इंडिया का. हाँ. ठीक है, अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? उस रूरल इंडिया के जितने लोग हैं उन सबका नाम अगर मेरे पास है, सो दिस विल बी माय सैम्पलिंग फ्रेम. लिस्ट है, देन ओनली आई विल गो फॉर प्रोबेबिलिटी. सैम्पलिंग फ्रेम विल डिसाइड कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकते हो या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं. बट इफ यू डू नॉट हैव दिस लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स, क्या आपके पास अब ये डेटा कहाँ से मिलेगा? सेंसस से. तो क्या अपडेटेड सेंसस है? इफ यू हैव द अपडेटेड सेंसस, you have list of all the population, list of all the members. but if तो अब इस रूरल इंडिया में कौन कौन रहता है, कहाँ कहाँ रहता है, ये लिस्ट नहीं है ना. अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम. क्लियर? फाइन. लेट्स से यूनिवर्सिटी. ओके, यू वांटेड टू, सेकंड एग्जांपल, आई वांटेड टू सी द एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन अमंग द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. क्या करना है? लोग जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन कितना है, कितना ज्यादा है कि वो बिजनेस न्यू वेंचरिंग में जाएंगे. दिस इज माय टॉपिक ऑफ द यस मैम. सो व्हाट विल बी माय पॉपुलेशन हियर? सारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के हैं. ठीक, फाइन. अब यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी, ऑल द यूनिवर्सिटी is my population. University is my population, not university student. Okay, fine. Now list of all the students of this university will be my sampling frame. Clear? Understood difference? सैंपल इस सैम्पलिंग फ्रेम से निकलेगा मैम. अगर सैम्पलिंग फ्रेम है तो वो डिसाइड करेगा कि आपकी सैम्पलिंग का मेथड क्या होगा. वो प्रोबेबिलिटी होगी या ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी होगी. नाउ यू जस्ट अंडरस्टूड. तो ये जैसे हम मान लीजिए कि एक सर्वे कर रहे हैं, मतलब एक टॉपिक है हमारा, जैसे आपने पहले कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन का रूरल सेक्टर में मान लीजिए, और मान लीजिए हम वो भी देखना चाहते हैं और छोटा करके हम फर्रुखाबाद में है तो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के, तो सैम्पलिंग फ्रेम में हमारे पूरे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के रूरल इलाके के जितने लोग हैं उन सब का नाम और एड्रेस सब हम नोट करें पहले. अगर है आपके पास, देन ओनली यू कैन प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम. अच्छा, और नहीं है मैम तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं कर सकते, आप नॉन प्रोबेबिलिटी पे जाओगे. अच्छा, ठीक है. ठीक मैम. जब लिस्ट ही नहीं तो कैसे करेंगे? क्लियर एवरीवन?
सबको क्लियर हुआ सैम्पलिंग फ्रेम? यस, हेलो यस मैम। हाँ मैम, इट मीन्स कि जब हमारा पॉपुलेशन इनफाइनाइट होगा तो हम सैंपल फ्रेम नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे, सिंपल। Okay. क्यों? क्योंकि लिस्ट ऑफ एवरीथिंग इज नॉट देयर। अब एंड मैम नॉन that we will प्रोबेबिलिटी come, अभी डिस्कस करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी विल डिस्कस, दैट टाइम वी विल टेक दैट क्वेश्चन। मैम ठीक है, एक नाउ एक ओनली आई और वांटेड टू टेल यू कि सैम्पलिंग फ्रेम समझ आ जाए आपको बस। मैम मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। ये जैसे मैं करीब 2 साल एनएसएसओ में भी काम किया मैंने, तो वहां पे एक जो सैंपल एरिया होता तो वहाँ सभी की लिस्टिंग करते थे पहले हम लोग, जितने लोग उस क्योंकि सैम्पलिंग फ्रेम जरूरी है। अच्छा, तो वही सैम्पलिंग फ्रेम होगी, फिर वही उसमें सैम्पलिंग से हम में जो आप सैंपल लेते लिस्टिंग थे। करते थे, हाँ सैम्पलिंग फ्रेम ठीक, का वही है सैम्पलिंग फ्रेम जो आप लिस्टिंग कर रहे थे। ठीक है, ओके। ऐसे ना जिस यूनिटी का किया है तो आपको क्या है, इफ यू वांटेड टू डू एनालिसिस सैम्पलिंग फ्रेम बनाते टाइम जनरली, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे इनकी जिनकी नॉन पॉपुलेशन होगी, जिनकी पॉपुलेशन इनफाइनाइट नहीं है ना। लेट्स से बैंक पे कर रहे हैं तो आपको पता है कि 10 बैंक है, 12 बैंक है, कितनी बैंक हैं आपको पता है वो, तो उनकी तो नॉन पॉपुलेशन है और उनका सैम्पलिंग फ्रेम भी बन जाएगा। हाँ मैम। और एचआर में कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी के टीचर्स पे कर रहा है, स्कूल टीचर्स पे या students पे कर रहा है, somebody doing this kind of the research where population is known, and then when everybody is preparing their sampling frames, then sometimes we got many mistakes, और जब ये mistake होती है that's why your sampling, there is your sampling error will be very much, तो सैम्पलिंग एरर बहुत ज्यादा होती है अगर आपका सैम्पलिंग फ्रेम रॉन्ग बना हुआ है। सो व्हाट सैम्पलिंग एरर्स कैन बी डन और जनरली ऑब्जर्व्ड, जो आप सैम्पलिंग फ्रेम क्रिएट करते हैं, सो व्हाट कॉशंस यू शुड टेक। लेट्स से आई एम टेकिंग द डेटा, आई हैव टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, सो व्हाट ईमेल आई वांट, आई शुड नीड अ ईमेल ऑफ रजिस्ट्रार ओनली, बट व्हाट आई हैव द ईमेल्स ऑफ टीचर, और I wanted to do research on teachers' addresses, not their university address. अब यूनिवर्सिटी एड्रेस नहीं है तो हाउ कम आई नो कि ये जो टीचर है to which university he or she belong, private university or government university, so that you can get some kind of inferences. So that's how one should be very much cautious about when preparing the sampling frame. Clear? Sampling frame will go very, very, because when you have to write, you may do not have the list of population. Then what do you say? My population is rural India. What will be the sample frame? All the members of this rural India will be my sampling frame. Yes, ma'am. Okay. Understood? Okay. Yes, so sampling कैसे करें? अब सैंपल किससे करना है? बैंकिंग बैंक है। और when, how will you decide what will be my population? सैम्पलिंग तो तब करोगे ना जब आपको पता होगा कि मेरी पॉपुलेशन कौन है। Sometimes students do not know what is my population. They misunderstood कि मेरी population क्या है। So how will you decide what will be the population of your study? First, you should know for whom you are going to generalize our result. Let's say I said now I wanted to analyze entrepreneurial orientation of university students. So what is my population? All students who are studying in the university, because I wanted to generalize this finding for the university students only. Or if you wanted to prepare, let's say कोई यहाँ पे home science का भी होगा, तो let us take उनको भी थोड़ा सा लेते हैं कि somebody is preparing a meal for the school children, है ना, the children who falls into the age group of 5 to 8. So उनको वो जो meal बनाना है वो किसके लिए generalize करना है? For the school children. So what will be the population for them? School children. Another, let's say another topic may be travelers' experiences about this Oyo hotels. So what will be the population? Oyo Hotel of India. So what will be my population? Travelers, I'm again repeating my topic. Let's say I wanted to pursue a research. मुझे एक research करनी है, and the topic of my research is travelers' experience about Oyo Hotel in India. So what will be my population?
हम ओयो होटल्स लेंगे, उसकी जितनी मतलब ओयो होटल्स हैं जितने भी इंडिया में, वो सारे हमारी पॉपुलेशन होंगे। Somebody else? हम लोग जो उसमें रह रहे हैं वो मतलब जो लोग ओयो होटल में रुके हुए हैं वो पॉपुलेशन में होगा, उनके एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो हम और उनके लिए हमको ओयो होटल के Understood, Ekta? It is not. That's how I said. The people, students are many times they are confused. It is not Oyo hotel is your population. क्योंकि आपको Oyo या मैम hotel ट्रैवलर ऑफ द ओयो होटल, ट्रैवलर है ना, एंड कौन से वो ट्रैवलर जो इंडिया में ही बस कर रहे हैं. अब इन केस ओयो होटल में कई नेपाल एंड भूटान वहां पे भी बना रखा है. सो उन वो ट्रैवलर नहीं जो नेपाल और भूटान जा रहे हैं. ओनली दोज ट्रैवलर हु इज एक्सपीरियंसिंग इन इंडिया. Or if I say Indian traveler experience of Oyo hotel, then who will be your what will be your population? क्योंकि पॉपुलेशन पता है तभी तो सैंपल निकालेंगे पॉपुलेशन से. तो पॉपुलेशन क्या होगा? अब मैंने थोड़ा सा एक वर्ड ऐड कर दिया, इंडियन ट्रैवलर्स एक्सपीरियंसेस इन ओयो होटल्स. अगेन मैम, इंडियन ट्रैवलर्स. इंडियन ट्रैवलर्स. तो इंडियन ट्रैवलर कि बाहर के ट्रैवल्स भी लेना है, बाहर कोई अभी सिर्फ देखो इसीलिए टॉपिक है आपका इंडियन ट्रैवलर. सो फॉरेन ट्रैवलर अगर विजिट कर रहे हो होटल में रह रहे हैं so they will not be your population. They may reside in the ओयो होटल बट वो आपका पॉपुलेशन इंटरेस्ट नहीं है. Who is only Indian travelers. Okay. Understood. First case में all the travelers including Indian and foreign hotel, but that hotel should be in India. Fine. Yes, ma'am. In this case, hotel may be anywhere, but person should be India only, Indian only. वो होटल कहीं भी हो, all over the world, doesn't matter. What matter here? That person should be Indian. And now you know कि Indian होने के लिए क्या चाहिए. Clear? Is it clear to everyone? So, or you are devising something for the woman who falls in the age group of 15 to 45 years. So you should understand आपको 45 years के above जो भी है वो आपकी population नहीं है. Anyone who falls below the age of year 15, that will be not your population. So you will not write all the women. As I said, investment strategy है तो population क्या होगी? Top managers. Not all the employees who are working in that particular bank. Only top managers. So you should know before sampling what is your population of interest or for whom you are going to generalize. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको अपनी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना. पॉपुलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू यू. शुड यू डू द सैंपल or should you go for entire population? So how to decide should you go for the entire population? Ma'am, it should depend upon the size of population, means number of members. Okay, of course, this is one. What is the size of the population? And और क्या? Timing. Time, how much time do you have? How much? What is the size of the population? And how much resources we have. do you have? And still one very important topic. Heterogeneity of the population. Heterogeneity. Because if everybody is thinking in the same way, what is the point of asking the question? आपसे पोल क्वेश्चन अगर मुझे कुछ पूछना है, if I want to ask something and I know everybody will give the same answer, so I should not ask ना. I know एक से पूछो से दो से पूछ लो, that will be the fine, that will be sufficient enough. So next, how much your data is heterogeneous. Fine. Let's say financial inclusion in rural India. So rural India will be your population. But should I go for sampling or should I do should I take the samples of the rural India or should I I have enough resources, I have enough time also, and should I go for the population? Then I should know what do you mean by this rural India. Rural India it covers the Uttarakhand, this mountainous part also,
and then plain areas, India, and then areas which are near to the sea, and near some rural part of this Tamil Nadu. So this is lot of heterogeneity because the people who are residing in the Tamil Nadu, they have entirely different, southern part have an entirely different kind of perception than the eastern part, or than the northern part. Then the proportion, the ratio between male and female, that will also lot heterogeneity there. In terms of age, rural India, again the heterogeneity are there. So we can think of कि हमें population लेना है कि नहीं लेना, और अगर सब एक ही तरीके के होते so we can choose a new. So heterogeneity is very, very important. Then of course the time, resources is there. Then should you go for sample or not? Heterogeneity is again very, very, very important thing. Fine. Next question, again very important here. When you go for, let us go for a little review what we have done so far. Abhi sampling mein. First, writing during when you are writing your synopsis or your thesis, your research methodology chapter will start with type of research design. You have to justify, then type of research method, you have to justify, and then sampling. There you also have to define your population. The thing till now we are talking about, that is your theoretical population. Rural India, it is your theoretical population, because you wanted to generalize your result for this rural population. Another thing here, that is called your study population. What do you mean by study population? Can you get access to? Do you have access of this whole India, this whole theoretical population? क्या आप इस पूरे population को access कर सकते हैं? No, ma'am. No, ma'am. You may have or you may not have. It depends upon the population क्या है. You may have, fine, or you may not have. Let's say, if you wanted to meet to the, let's say we wanted to take the perception about the perception of vice chancellors about the NEP 2021, or about the students performance during this COVID-19. अब आपने बोला मुझे किसका response चाहिए? Vice chancellors का, all the university vice chancellors. So you have the population, all the university vice chancellor, that will be your population. Fine. Now you wanted to take the response, and then, or since you will get the name, you just Google it, the name of the university, you will get the list of the name of the vice chancellor. So you have the sampling frame also. But do you have access of all that vice chancellors? You may have access of only those vice chancellors, either from the small university or maybe sometimes maybe from the private university, or if you have any approach in that particular university, then only you have access to that vice chancellor. Otherwise, you may not be able to collect the data because you don't have access to that particular person. So that's why your study population is a part of your theoretical population. Understood? Theoretical study population. Clear? Now, based on this study population, we will prepare the sampling frame. That is, we will prepare a list. Why? Because if the sampling frame is there, we can access to, let's say, okay, we have the list of the university, we have the list of the vice chancellor, but how to go about that vice chancellor? So while preparing this sampling frame, we should know the names, in which university they are there, what is the address, so that if I choose Mr. X person, then who is this Mr. X? He is that Mr. X is the vice chancellor of XYZ university. Okay. So where is this XYZ university? It is somewhere in Gujarat. Okay. Then you can go. Okay. Now you wanted to take the response of this from Mr. X. You can just visit to the Gujarat address of this particular university and you will get the response. Clear? So sampling out of this theoretical population, ये बहुत बड़ी सी है. See, so many persons, red color, white color,
blue, white, red, blue. This is whole. ये क्या है? This is all the people population. Now, since I do not have access of all these, so what? I have access of this particular thing. Let's say rural India. So rural India covers everything, but I do not have access to this whole rural India because of the time. PhD तो आपको 3 years में 3.5 years में पूरी करनी है. So you have to have the scope. So what I limit within my research is limited to the in Uttarakhand and UP only. So my study population will be now. My theoretical population is rural India, but my study population is what? Rural areas of Uttarakhand and UP only. Understood? Now how to prepare sampling frame? Now when I have the list of all the person who lives in this rural districts of UP and Uttarakhand, so that will be my sampling frame. This list of all this study population. अगर इन सब के नेम आप इस बुक में लिख दो, this is a book, so this will be your sampling frame. Clear? Theoretical population, study population, and sampling frame. Now this forms this. Ma'am, Yeah. Ma'am, I have a question. Yeah. हमने यार Anyone, please. मैम अगर हम लोग सैम्पलिंग फ्रेम नहीं बनाते हैं, मीन्स हम लोग को इनफ रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो उसका हमारे रिजल्ट और आउटकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा? If you have the definite population, definite means you know your population. बैंक है, आपको सारी बैंक्स के नेम पता चल जाएंगे आरबीआई से जाके, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी. आप नहीं बनाओगे, then you cannot go for with probability sampling. You have to do non-probability sampling. All your methods of study will be non-probability only. That's it. मैम Yes, Shalini. मैम जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर पर कोई रिसर्च करना है, तो उस जैसे कानपुर में ही रिसर्च करना है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का, तो उसके लिए कानपुर की जो भी पॉपुलेशन है उस सभी के नेम एंड एड्रेस हम लोग को सैम्पलिंग फ्रेम में मेंशन करना होगा, तभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, तब भी कर सकते हैं अगर आपके पास पूरी लिस्ट है. वो लिस्ट कहाँ से? सेंसस अगर हुआ है या कहीं पर लोगों के एड्रेस होते हैं, या इधर आप उसको कैसे लिमिट कर सकते हो? ऑल दोज whose एज ग्रुप मोर देन 18. तो मैम सैम्पलिंग फ्रेम में ये मेंशन करना होता है कि 18 to 25 का एज ग्रुप लिया, या फिर सबको? आप अपनी रिसर्च के स्कोप में मेंशन करोगे. सैम्पलिंग फ्रेम में पहले आप अपनी स्कोप में मेंशन करोगे कि मैंने सिर्फ उनको टारगेट किया है जो 18 से ज्यादा है. अब बिकॉज यू कैन हैव दैट डेटा. इलेक्ट्रल कमीशन जो आपका वो कमीशन है जिनके पास वोटिंग राइट है, उन सब के नेम्स एवरीथिंग यू कैन गेट इट. इससे छोटे जो जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है, तो उनका डेटा तुम्हें मिलेगा कैसे कि वो कानपुर में रहते हैं? यस मैम, है ना? So that's how. Clear? So somewhere you have to limit. मैम जैसे कि करना पड़ेगा. जैसे कि कोई रिसर्च पेपर जैसे मैंने स्टडी किया, तो उसमें उन्होंने जैसे मान लो मुंबई में उन्होंने कोई रिसर्च की, तो उन्होंने 100 पीपल का सैंपल लिखा और उन्होंने जो मेथड उसमें मेंशन किया उसमें उन्होंने सिंपल रैंडम सैंपलिंग ऐसा मेंशन कर रखा है, तो क्या उन्होंने पूरा मुंबई के पीपल का? that will be questionable ना. इसलिए अच्छा किस ये जो वो पेपर किस में पब्लिश हुआ, किस जर्नल में? ये मैम नागपुर सिटी में कोई रिसर्च हुई थी, ये शायद इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में पब्लिश हुआ था. अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि नेम्स तो इंटरनेशनल जर्नल ऐसे करके बहुत सारे हैं. आपको भी देखना पड़ेगा कि ये जो पेपर आप रेफर कर रहे हो, इससे मैंने बोला था क्वालिटी ऑफ पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन, यू आर टॉकिंग अबाउट मुंबई सिटी, और उसमें आपने 100 क्यों लिया? क्या 100 पूरी मुंबई सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर. यस मैम, सैम्पलिंग फ्रेम का अभी जो आप बता रहे थे, सैम्पलिंग फ्रेम का मैंने इस बारे में कभी मतलब सोचा नहीं इससे पहले कि सभी का नेम वगैरह एड्रेस वगैरह भी लेना पड़ता है,
तो ये एकदम से नई जस्टिफाई करोगे ना, जैसे आप सिंपल रैंडम कहा ना आपने, यस मैम, उसमें मेंशन है, उन्होंने किया हुआ है। अभी आई एम जस्ट कमिंग आफ्टर दिस ओनली, आई एम कमिंग विद कि आप कैसे उसको डिफेंड नहीं कर सकते हो या नहीं कर पाओगे। फाइन, ये इसके बाद बस हम वही टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। आई एम जस्ट वेट जस्ट 1 more minute शालिनी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज जस्ट अ सैम्पलिंग बैकग्राउंड। ओके, सैम्पलिंग फ्रेम आ गया, क्योंकि आपके पास लिस्ट है, सो यू कैन डू द, ये पूरी लेट्स से 500 की पेज में, इस पूरी बुक में नेम्स लिखे हुए हैं 500 कंज्यूमर के, तो 500 कंज्यूमर में से अब आपने कुछ चूज कर लिए रैंडमली। क्यों रैंडम क्यों करता है? बिकॉज यू हैव लिस्ट ऑफ दिस पीपल। अब अगर लिस्ट नहीं होती तो रैंडम कैसे करते? ठीक है, रैंडमनेस खत्म हो जाएगी। आप जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हो ना, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का जो, अच्छा मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अभी समझाती हूँ। चलो उससे पहले बस ये प्रोसेस ले लेते हैं कि कैसे करना है। ये प्रोसेस इज डिपेंड अपॉन दिस, यही सब लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। पहले आपको पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करनी है, देन स्पेसिफाई करना है व्हाट विल बी सैम्पलिंग फ्रेम, देन after sampling frame, that's why I said sampling frame will decide what will be your sampling method. Do you have the list of all the members of the population? Then your method will be probability. मैम उसके लिए सेंसस रिपोर्ट, जो सेंसस वगैरह का डेटा होता है, वो ले सकते हैं। ओके मैम, वहाँ पे पूरा पॉपुलेशन मिल जाएगा ना, यू कैन सी कि ये सेंसस का डेटा है और यहाँ से मैंने ले लिया, दिस विल बी द पॉपुलेशन लिस्ट। में डिटेल मेंशन करना पड़ता है। यस, आपको पूरी पॉपुलेशन मेंशन करनी पड़ेगी, नॉट नेम। पॉपुलेशन कितनी है वो मेंशन करना पड़ेगा, ओके मैम, नॉट द नेम। ठीक है, ओके, तो दिस सैम्पलिंग इन द सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग फ्रेम क्यों जरूरी है? डू यू हैव द सैम्पलिंग फ्रेम? क्या आपके पास पूरी लिस्ट है लोगों की, कितने लोग रहते हैं वहां पर? That will decide whether your sampling will be probability or non-probability. This will also give you an idea about what will be your sampling size. How will you collect the sample? And then how will you complete your data collection process? Oh, I guess what is happening? आपकी fine. I thought कि वो move नहीं कर रहा है. Okay, I'm just coming because we had already taken the population और हमने already explain कर दी, so I don't want to spend much time here. Now I'm coming from the straight from probability sampling. Now I wanted to tell all the clarifications. There were two types of sampling, probability and non-probability. Right? Now whether sometimes as I said ना, सब लोग लिख देते हैं my sampling is simple random sampling. My sampling is stratified random sampling. मैंने random sampling करी। No, very few paper you will see जहाँ पे वो लिखते हैं कि it is non-random sampling or it is convenient sampling or it is purposive sampling. Why? Because they want कि मेरी जो research है वो काफी authenticate हो जाए. But there is some special requisition is for probability sampling. What this special requisition is? All the members of this population have equal chances of selection. Then only this will be random. अब equal chances of selection आप कैसे दोगे? If you don't know, let's say you wanted to see ना मुंबई सिटी के लोगों का डेटा, मुझे मुंबई के सिटी के लोगों का सर्वे करना है, और शालिनी उनको कानपुर के लोगों का सर्वे करना है, एंड शी वांट कि मेरी जो सैम्पलिंग हो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो, so she should know beforehand कानपुर यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन कितनी है. You will get the data, okay, let's say 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ है. Now उस 1 करोड़ जब आपके पास लिस्ट आ गई, then only this list, from this list of population, how will you, since you have the list of population, and then only you can go for a random selection and your sampling will be probability. बट अगर आपके पास ये पूरा पॉपुलेशन डेटा ही नहीं है, यू डोंट नो आपके इस पूरे उसमें कितने लोग रहते हैं, उनके क्या क्या नेम्स हैं, देन यू कैन नॉट गो फॉर रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसके बात करते हैं. नाउ सिंपल रैंडम, व्हाई सैम्पलिंग फ्रेम इज रिक्वायर्ड? सिंपल रैंडम, लेट मी एक्सप्लेन यू नेक्स्ट. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, व्हाई? अगेन इट इज for
each and every unit have a equal chances of selection. That is called probability sampling. Non-probability sampling, where some elements have no chances of selection. आपने purposely, let's say you have the list of 100 people and you have purposely asked the questions only to female or only to male or only to the age group of 30, then this will be a non-probability sampling. Fine. Let's say one more example. If you visit every household in a given street and interview the first person to answer to the door, आपको कंज्यूमर का सर्वे करना है एंड यू सेड कानपुर में सब लोगों का मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करी है. ओके, बट व्हेन यू वेंट फॉर डेटा द डोर एंड डोर नॉक करने पे वन पर्सन कम्स टू यू, तो जो भी पहले आया यू सेड प्लीज फिल माई डेटा. वेदर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव इक्वल चांसेस ऑफ द सिलेक्शन? नहीं. आपने किसको किया? जो आपको सामने पड़ गया. Fine. So this is not a probability sampling, क्योंकि बाकी सबको तो आपने चांस नहीं दिया ना. This is called non-probability sampling. Hello. Fine. Yeah. Ma'am, can we use the combination of both sampling techniques, probability and non-probability? No. How come? If there are two different methods, two different objectives, two different populations are there, you can do stage wise. Like first stage, we have the probability sampling. For the later stage, it is a non-probability. That you Yes. can do. Yes, That yes, you can do. Yes, of course. That you can do. This Okay, can be done. thank you. Thank you. Yes, sir. Okay. Now, probably as this is very important, simple random almost in all the paper, either you found this simple random sampling or stratified random sampling. But very important requirement for this simple random sampling is, one, you should have the list of all the population. You should have the sampling frame. आपने कानपुर के सारे कंज्यूमर का डेटा आ गया, सबकी नेम है, उस नेम को एक चिट बोल में डाला, देन चूज, लॉटरी होता ना, देन यू पिक आउट 10, लेट्स से 10 लोगों से डेटा लेना है, देन वो जो 10 आए, यू हैव कलेक्टेड द डेटा. सो दिस इज कॉल्ड रैंडम. व्हाई? नाउ ऑल द नंबर्स आर देयर. उन सब जितने भी सर्वर कंज्यूमर थे, उन सबको आपने इक्वल चांस दिया सिलेक्शन का. आउट ऑफ दैट वो 10 सिलेक्ट हुए. सो दिस इज कॉल्ड रैंडम सिलेक्शन. बट if you do not have list of that population, you cannot do this randomly. So that is only probability sampling. When we should go for simple random sampling, only if your data is homogeneous. If it is too heterogeneous, let's say, okay, list of population is 100. You know the names also. 100 लोग हैं जिनसे आपको डेटा कलेक्ट करना है, you know, और उन 100 के नेम्स भी पता है. But out of this 100, 75 are female and 25 are male. And then you said, I will do random sampling. So आपने 75 and 25 डाला and random निकाल लिया. Random, when you choose random choose, it may possible all the males. क्योंकि आपकी तो रैंडम है ना, तो ये जरूरी हो सकता है आप वो जो 5 लोग आए जिनकी लिस्ट है, जो चूज किया आपने 10 लोग, वो पूरे के पूरे मेल ही हैं, और मे बी ऑल द पर्सन्स आर फीमेल. सो इफ यू हैव चूजन ऑल द फीमेल्स, इज इट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? सैंपल मीन्स वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का ना. तो ये इफ यू हैव चूजन रैंडमनेस, आपने पूरी रैंडमनेस करी एंड फीमेल्स को चूज कर लिया. क्यों चूज नहीं किया? वो तो आए, पिक में करने में आए. तो वो क्या सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगी पॉपुलेशन का? नो मैम. नो मैम. ओके. और मे बी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 2 मेल आए और 2 फीमेल आई और 8 मेल आ गए, तब ट्रू सैंपल है ये? इज इट रैंडम? सिंपल रैंडम करना चाहिए नहीं. क्यों? बिकॉज फीमेल ज्यादा है, आप मेल आप ज्यादा फीमेल है, बट आप इन फीमेल्स को ओवरलुक कर रहे हो. सो हियर सिंपल रैंडम विल नॉट वर्क. Simple random sampling can do only when your
population is homogeneous, readily available, and each and every subset of the frame have equal chances of probability. Fine. And then only in this case you have either you can do the lottery system, जैसे मैंने बोला ना सबके नेम डाल दिया और फिर चूज कर लिया, तो वो जो नंबर चूज किया that will be your sample. Next, your Shanini, I guess you asked the question, right, about this Mumbai wala. Yes, ma'am. So understood that is challengeable. Yes, ma'am. Because Mumbai mein it is not like everybody have the equal age group. Ma'am, Everybody have the वो रिसर्च पेपर जो था वो नागपुर सिटी पे उन्होंने स्टडी किया हुआ था, एंड उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेंशन किया था, एंड जो उसमें उसके बाद में उन्होंने सैंपल मेथड नीचे अलग से स्पेसिफाई किया था, उसमें क्लस्टर मेंशन किया था उन्होंने दो डिफरेंट क्लस्टर किया नहीं, हाँ फिर उन्होंने क्या किया, क्लस्टर किया है. दैट मीन्स क्लस्टर मेल एंड फीमेल ऐसे करके उन्होंने अलग अलग क्लस्टर्स बनाए और फिर वहां से 100 दैट्स अंडरस्टूड. सैम्पलिंग मेथड उनकी क्या थी, रैंडमनेस कैसे, क्या क्लस्टर का रैंडम था कि सारे बनाए 5 क्लस्टर्स को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में बनाए और उन क्लस्टर का सिलेक्शन ओनली रैंडम था, सैंपल का सिलेक्शन रैंडम नहीं. ठीक है, तो मैम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कर इसको बोलेंगे नहीं, ये क्लस्टर सैम्पलिंग. आई विल टेल यू कि क्लस्टर सैम्पलिंग फिर कैसे बनेगी. ठीक है, ओके मैम. ठीक है, ये क्लियर है, सिंपल रैंडम. मैम अभी जो एक्सक्यूज मी मैम अभी जो आपने मेल एंड फीमेल का जो सैंपल का बात किया, क्या उसमें हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का यूज करेंगे मैम? यू कैन डू द क्लस्टर. स्ट्रैटा बनाते हैं जियोग्राफी के बेसिस पे. क्लस्टर एंड स्ट्रैटा में बस इतना ही डिफरेंस है. स्ट्रैटा यू विल प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफी लोकेशन. मैम एज आई हैव रेड इन द बुक्स कि जो हमारा क्लस्टर है वो नेचुरली डिफाइंड होता है, व्हाइल स्ट्रैटास हम लोग अपने अकॉर्डिंग ड्राफ्ट कर सकते हैं. कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डिफाइन आल्सो. You can make the different clusters also on the basis of the characteristics. Okay. If you have the same kind of characteristics, then you can define your strata also. Okay. But yes, of course, male and female में आप वहां पे 2 अलग अलग क्लस्टर बना के स्ट्रैटा वाइज कर सकते थे. That is of course no problem. Now systematic random sampling again ये भी बहुत जगह मेंशन होगी पेपर में, वो भी पॉसिबल नहीं है unless you have list of all the population. That is again will be done by lottery system only. 100 people की लिस्ट होनी चाहिए, पहला उठाया जो नाम आया, उसके बाद नेक्स्ट 10th 5th 13th 15th or maybe whatever you choose. So if you are writing that you have done simple random sampling or systematic random sampling, be very cautious while writing this word. Better not to, unless you have the list of all the population. वो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आपको अपने सैम्पलिंग को जस्टिफाई करने में. सी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज व्हाट 1 2 3. सो ये थर्ड नंबर लिया, फिर से नेक्स्ट थर्ड, सो दिस विल कम टू 6 एंड देन नेक्स्ट कौन सा चूज होगा 9th. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट रैंडम से. बिकॉज एवरी यहाँ पे भी सिर्फ पहला सिलेक्शन रैंडम है. फर्स्ट वो सेकंड भी हो सकता था, थर्ड भी हो सकता था. नेक्स्ट सिलेक्शंस विल डिपेंड अपॉन द फर्स्ट यूनिट only. So this is called systematic random sampling. Generally you will get in all the papers. This is called what stratified that you are talking about. Stratified means if you have the population, let's say Kanpur. मैम Yeah. प्रीवियस स्लाइड एक बार फिर से दिखा दीजिए. Yeah. Okay. The systematic random sampling. Here. There. मैम इसमें ये जो नंबर सेट लिखा हुआ ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है. Number this 4 13 24 34. This या मैम. okay. This is what. See, simple random क्या हुआ, आपने if you have to choose 50, so all the 50 you have to pick it up. बॉल से 50 निकालने पड़ेंगे. That means everyone have the equal chances of selection every time.
एक निकाला, उसका नाम हटा दिया, फिर वापस डाल दिया और फिर से सिलेक्ट किया, सेकंड निकाल दिया, देन अगेन. सो दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम. सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, 100 के नेम्स लिख दिए एंड यू हैव चूजन वन रैंडम थिंग. एक नंबर, लेट्स से फर्स्ट नंबर आया आपका 4th, so you have chosen the 4th and then you said now after every 16th item we will choose. so excel में शीट पड़ी है, 4th नंबर का चूज किया, 4th नंबर के बाद कौन सा चूज करेंगे, जो 16 नंबर पे लिखा हुआ है, जो भी नेम हो. देन नेक्स्ट कौन सा होगा, 16th के बाद 32 नंबर पे जो भी स्टूडेंट जो नेम है वो सिलेक्शन होगा. नेक्स्ट 32 का मल्टीपल 16, fine, 48 number, that will be the selection. This is called systematic sampling. Clear? Number set. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Shall we move ahead? Yes, ma'am. Okay, so this is like everybody is worried about stratified. So if the population impresses a number of the district categories, in that case, this population can be framed into first study. Again, this is very this technique is widely used by the researcher. Stratified random sampling. They used to write that my my sampling method is stratified random sampling. So what is this stratified random sampling? Let's say you wanted to do any study in UP. Or let's say यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? In somebody tell. 75. 75. Okay. Now what? So you have list of all that 75? आपके पास में 75 डिस्ट्रिक्ट की तो लिस्ट है ना? You know the name of that all 75 districts? मिल जाएगी, नहीं है तो you will get it. Ma'am, we can get it from Google. Fine. Yes. हाँ, you can get it. That's right. So what you do? Strata. अब आपकी now the thing is, can you approach to, so that is your theoretical population हो गई, but can you have access of all that district? क्या आप इन सारे डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट करोगे? So said No, ma'am. not possible. Not possible, है ma'am. ना? So what you do? Now you will स्कोप में आप लिमिट करोगे. I will collect the data from कानपुर, लखनऊ, maybe मेरठ, maybe नोएडा, 4, let's say 4. So what you done? You have made some strata. That's what, on the basis of certain characteristics. So when population embraces a number of district categories, then this frame can be organized into separate strata. ये स्ट्रेटा आपके डिस्ट्रिक्ट्स के बेसिस पे, लेट्स से पहले आपने क्या किया, होल यूपी विल बी डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, देन डिस्ट्रिक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू, नाउ आपको लग रहा है कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं, पूरे कानपुर से आप रैंडम सिलेक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करोगे तो इन दैट केस व्हाट यू हैव, इफ यू आर टेकिंग कानपुर होल डिस्ट्रिक्ट, सो व्हाट यू डू, आप पूरे कानपुर से लेना पड़ेगा. So you can further divide district into maybe urban part or lower, rural part. Maybe districts further into villages. So what we are doing, we are creating some stratas. So each strata is sampled as independent subpopulation. Now, अगर मुझे 500 का डेटा लेना है and मेरे ये जो मेरा जो ये districts हैं, these 4 districts which I choose, which I made strata. Out of this 4 districts, this 500 selection should be random. This is called stratified random sampling. Understood? Stratified random sampling. मैम ऐसा हो सकता है जैसे जो स्ट्रेटा बनाया हुआ उससे वापस से फिर फर्दर स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया जाए. सब पॉपुलेशन, हाँ नहीं वो तो आप दैट इज कॉल्ड स्टेज वाइज, वही बोलते हैं स्टेज वाइज. फर्स्ट यू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और फर्स्ट यू डिवाइड. ओके यूपी में भी आप ये चूज, अब वो क्वेश्चन आएगा ना, व्हाई यू चूज ओनली दिस कानपुर, व्हाई लखनऊ, व्हाई मेरठ, व्हाई नोएडा, व्हाई नॉट रेस्ट पार्ट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट है ना, यू सेड 75 डिस्ट्रिक्ट. सो व्हाट यू डू, फर्स्ट यू डिवाइड होल यूपी इनटू, यूपी को वो 4 तरीके से डिवाइड करते हैं ना, 4 पार्ट इन यूपी. एक अवध वाले में है, वेस्टर्न यूपी है ना, ईस्टर्न, इस टाइप से. तो फर्स्ट यू डिवाइड होल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. आउट ऑफ दिस 4 पार्ट नाउ आई चोज डिस्ट्रिक्ट. लेट्स से अगर मुझे पूरा यूपी करना है देन आई सेड ओके नाउ वेस्ट में
लेट्स से 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, सो आउट ऑफ these 30 डिस्ट्रिक्ट मैंने वो 30 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट डाली एंड देन आई चूज 2 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ दैट 30 डिस्ट्रिक्ट, सो दिस इज कॉल्ड रैंडम। अब डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन रैंडम हो गया ना पहले। यस मैम, यस मैम। नाउ ऐसे देन लाइकवाइज यू चूज 8 डिस्ट्रिक्ट, लेट्स से आपको 8 डिस्ट्रिक्ट करना, में 4 है तो एक एक सिलेक्ट कर सकते हैं, सो दिस इज रैंडम। सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सो दिस इज रैंडम, डिवीजन हुआ, देन उन 4 पार्ट्स में अगेन योर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन। अब वो पूछेंगे आपने ये डिस्ट्रिक्ट क्यों लिया, सो इधर यू कन्विंस की पॉपुलेशन के बेस पे लिया है अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी के जा रहे हैं, और इफ यू सेड नो मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करी है, देन यू सेड आई जस्ट मेड अ लॉटरी सिस्टम and then I choose one particular district from each these or 2 particular districts from each these subgroups, जो subgroup आपने सब population बनाई। Now from these districts again if you have the list of the population, so again randomness, इस district में इतनी population, यहाँ पे ये population, इस district में इतनी, इस district में इतनी, so all of district again I choose 100 यहाँ से लेना, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, and मेरा ये sample हो गया, so again equal chances of selection. This is called stratified random sampling. Clear? Yes ma'am. But again I said whenever somebody is writing stratified random sampling, this is no one have done this so far. Yeah, actually stratified random, because again this can be work only if even every unit in a stratum has same chances of being selected. कानपुर में अगर ले रहे हैं आप, कानपुर एक डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं, तो कानपुर यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट के सारे लोगों का जो सिलेक्शन है सबके पास इक्वल चांस होना चाहिए सिलेक्शन का। इफ इट इज नॉट देयर देन इट इज कॉल्ड नॉट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। मोreover इट मे नॉट वर्क। लेट्स से आपने ओके वेस्ट यूपी में आउट ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट वेदर ऑल द डिस्ट्रिक्ट हैव इक्वल पॉपुलेशन? नो मैम। नो मैम। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ कम पॉपुलेशन भी होगी, लेट्स से आपने 4 पार्ट डिवाइड किए, सो इधर लेट्स से जो ये आपका नॉर्थ यूपी है वहां के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है एंड वेस्ट यूपी के लोगों की कम है, बट जो पॉपुलेशन व्हेन यू चूज द डिस्ट्रिक्ट आपने बिकॉज डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन वाज रैंडम, तो आपने वो डिस्ट्रिक्ट चूज किया जहाँ पे पॉपुलेशन ही कम थी, सो वन डिस्ट्रिक्ट विच हैव अ वेरी लेस पॉपुलेशन वहां से भी 100 लोगों को लिया, एंड वन डिस्ट्रिक्ट वेयर द पॉपुलेशन इज वेरी बिग वहां से भी 100 ले लिया, तो वो तो फिर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन नहीं हुआ ना। Yes ma'am. Fine. So that's how you should be very cautious about. Every time when you defend your thesis or synopsis, these type of the question will come to you. You should know मेरी sampling method क्या है, ये certified random है भी या नहीं। If it is there, then only right. That's why an adequate representation of minority subgroup of interest can be ensured by stratification. अब stratification करते भी क्यों है? Because if इस यूपी में लिया, पूरा यूपी से करना है, एंड यूपी में आपने कानपुर एंड नोएडा से ले लिया, इन दैट केस बाकी की सारी डिस्ट्रिक्ट से तो कुछ भी नहीं लिया, बट यू वांटेड टू सी ओके आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द यूपी, देन यू हैव सब डिवाइड, आपने उसको स्ट्रैटा में डिवाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में बी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स और डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में बी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में बी विलेजेस, इस टाइप से आपने स्ट्रैटा पे डिवाइड किया, सो इन दैट केस एवरी unit have a equal representation at least. That's why we will do stratified random sampling. And sometime of course within strata आप उसको करना चाह रहे थे, then you can say okay out of this उन villages से मैंने population कम उठाई है और जहाँ पे population ज्यादा है वहां से sample size ज्यादा लिया है, that may be only justification and then it will be a random selection. See here stratified random sampling कैसे? I made a strata, what? One strata women. एक डिस्ट्रिक्ट में विद इन कानपुर ओनली, इफ आई मेड वन, एक क्लस्टर बनाया ना कानपुर का, इज वन और माई एरिया ऑफ स्टडी भी लिखना होता ना, व्हाट विल बी योर एरिया ऑफ स्टडी, सो आई सेड माय एरिया ऑफ स्टडी इज यूपी, शालिनी का एरिया ऑफ स्टडी इज my area of study is Kanpur. Fine. Now within Kanpur, male and female both are there. So what you do? You want कि आप जो जिन लोगों से आप अप्रोच करो, you want okay your sample should represent both male and female.
So what you do now, you will do strategy of research will be divided into first strata of on the basis of their characteristic, that let's say on the basis of their gender, male and female or women and men, one strata, men is strata. Now within this strata, ये दो strata बन गए. From this strata we can do the random sampling. I have to choose from the male 3, I have to choose from the female 3. So I can either do simple random sampling, 4 members के and choose any 3 अगर मुझे 3 निकालने हैं, and male में भी 3 निकाल लिए. Or within this strata we can do systematic random sampling, like I will choose first number, third number, and then sixth number. So within strata, sampling may be simple random or maybe systematic random sampling. This is called stratified random sampling. Clear? That's why it is called stratified and random. पहले strata बनाना है and then random sampling करनी है. Understood everyone? Yes, ma'am. Okay. Now cluster. Strata and cluster is almost same, except cluster is an example of 2-stage sample. Because in first stage, as I said, you have to choose a sample of area. Let's say from Kanpur, from within UP, we have to choose the Kanpur. So Kanpur will be a cluster first. Then second stage, a sample of respondent within those area will be selected. So first population will be divided into cluster. Cluster कैसे divide करेंगे? On the basis of homogeneity of the units. Now this homogeneity may be on the basis of geographical location. I said कि आप geography के basis पे कर सकते हो. Let's say North UP, West UP. So these are North UP is one cluster, West UP is another cluster. Now from North UP, take few sample. From West UP, take few sample. So पहले first stage क्या हुई? You have to divide area North UP, West UP, and then from this we will choose the sample. We will choose the person or respondent. So this is called second stage. That is called cluster sample. Now again, when should we use the second cluster sample? This sample should be the individual only. We cannot choose groups. जैसे male or female groups नहीं. From these cluster, each and every individual will be targeted, and each and every individual should have equal chances of selection. 4 या 5 cluster बनाएंगे. Then from that cluster we can choose one particular cluster for the purpose of the study. Let's say even North India. North India में we have made cluster. Cluster of what? One cluster Uttarakhand, another UP, another Jammu, then Haryana, then Himachal and Delhi. और let's say okay, मैं नॉर्थ इंडिया में कैसे क्लस्टर, पहले तो नॉर्थ इंडिया आपका पॉपुलेशन अगर है तो नॉर्थ इंडिया को क्लस्टरिंग सैम्पलिंग करनी है. कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. So what? We have divided into clusters. Location, geography के basis पे. One is Uttarakhand, another is UP, another is Haryana, another is Himachal, another is Jammu. So ये first stage हो गया. Location के basis पे cluster बना लिए. Now can we go? Either we may go for all the clusters, या तो हम इन सारे cluster से data लें, or we may choose out of all the 5 clusters, we will choose only 2 clusters, that is Uttarakhand and UP. Why? Because one is plain, another is mountain. Or we may choose one Jammu, one UP. Or we may choose Chandigarh and maybe UP, or Chandigarh maybe Uttarakhand, based on the certain characteristics. So this is called selection of the cluster. Third, now within that cluster, अब ये जो चंडीगढ़ cluster, आपने हरियाणा का cluster लिया, or you have choose UP cluster. Within this cluster, now everybody have equal chances of selection. वहाँ से then you have to do the random sampling, because all the unit have equal chances of selection. Clear? Stratified sampling and
cluster sampling? Yes, ma'am. And so this is what I had already told you. Just one point of difference. When you should go for, strata. Strata generally are represented in the sample, but these strata means just subset of sample. Like Chandigarh is one cluster, and within that cluster, male is one strata, female is one strata. Or within the Chandigarh cluster, below 14 age is one strata, 14 to 25 age group is another strata, 25 to 35 age group is another strata. So this is stratified. This is strata and location was your cluster. In stratified sampling, the best result will get with the help of the survey. Because strata के लिए जरूरी है that strata should be homogeneous, but clusters are always heterogeneous. चंडीगढ़ यूपी से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए. चंडीगढ़ should be different from Uttarakhand. So there must be a heterogeneity. But strata should be homogeneous within itself. Female means all the female only. Male means only all the male. Below 14 strata means only those whose age is below 15. That is called strata. Understood? Difference between strata and clusters. Now this is multi-stage sampling. You can see now, cluster is two-stage sampling, but you can simultaneously use multi-stage. Like for first two stage you have done probability, but next one particular stage you may do non-probability. So this is a multi-stage sampling. Multi still more complex. So यहाँ पे stage 2 से ज़्यादा हो जाती हैं. Of cluster sampling in which 2 or more levels of sampling will be done. First stage, some randomness, let's say district select किया. Second stage randomness, within this district, villages किया. Then within third stage, within this district, houses choose किया. And ultimately, let's say मैंने कानपुर लिया. फिर कानपुर में बहुत सारे ये होंगे, like what we call it. कानपुर में क्या बोलते हो आप, जो वो सब पार्ट्स हैं, मोहल्ला, राइट? तहसील, तालुका. तहसील के बेसिस पे कर सकते हैं, तालुका कर सकते हैं, ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक्स हो सकते हैं. हाँ, ब्लॉक्स हो सकते हैं. तो कानपुर में these ब्लॉक्स. सेकंड स्टेज, नाउ these ब्लॉक्स में, अब इन ब्लॉक में तो बहुत सारे घर हैं, तो थर्ड स्टेज क्या कर सकते हैं, इन ब्लॉक में ये घर, ये घर, ये घर, ये घर. अब उस घर में you can do random. Ultimately you can go and select. You can survey the data. So this is called what? Multi-stage sampling. Sometimes आप लोग के घर पे कभी-कभी वो free sample distribute करने आते हैं. Have you witnessed this thing? Yes. Free sampling. This is Yes. multi-stage sampling. They do multi-stage. House. First they select the village district, then they select the village, then they select the houses, and then they come to you for free sampling. So this is again, we had already explained multi-stage sampling. Multi-stage sampling generally, it is when we do full of clusters. Let's say cluster में क्या है? Once you make the cluster, now every individual have the equal chances of selection, but it involves cost. चंडीगढ़ में, फिर चंडीगढ़ में सबके पास जाके डेटा लेना पड़ेगा. So this is very costly. So in that case, multi-stage sampling can avoid this cost or can reduce this cost. Moreover, multi-sampling में you can take the small sample also. That will work. हर एक select cluster से आप छोटे-छोटे sample ले सकते हो. But if you go for only one cluster or two cluster, then you have to take the data. You have to take a large sample. So multi-stage sampling, that's why it is generally used. Because this is truly, though it is not true random sampling, but somehow it reduces the cost which is associated with other kind of
क्लस्टर सैम्पलिंग, मे बी स्ट्रैटा सैम्पलिंग, तो वहां पे इसको आप रिप्लेस कर सकते हो. Okay, just I have to finish. I will be able to finish before 3. Okay, Okay. So this is again now non-probability sampling. अभी तो सब हमने पढ़ा सब probability. But if you see, all that probability sampling requires sampling frame. In any case, सारे के सारे मेथड में आपको sampling frame की जरूरत होगी, which is generally not possible. So what we can do? We can go with non-probability sampling. What then? All the methods you see. So class, whenever there is some probability sampling, always there is a alternative associated with non-probability sampling. That probability sampling that is called non-probability sampling. Like male and female. अब probability sampling करेंगे. So let's say मैंने 8 मेल ले लिए, 100 में से 25 मेल थे, 75 फीमेल थे, and I have choose, क्योंकि आपने random sampling करी, you said I will do stratified random sampling. So you made 2 strata, male and female, but male तो 25 है, female है 75, but you said आपने तो random बोला ना. So randomness में क्या आया? In this randomness 8 male आए, 2 female आए. So this is not too representative of sample. So here what will work? Here non-probability sampling will work. That is called quota sample. In quota sampling, we'll always fix a number for a particular group. If it is male and female, then based on the number of the male and female, I will choose a particular quota. Male है because male के numbers 20 हैं, so I will choose 30% male and 30% female. So out 30% male मेरे 100 में से male ले लिया और 70% female लिए. Why? Because the number of female is more. So this is called quota. And that's why this is mutually. Quota किसका है? If you cannot go for stratified random sampling, better to go for quota. Quota it will be a better representation of your population. But in quota, selection is of course not random. क्योंकि आपने आप डिसाइड कर लिया है कि मुझे सबको इक्वल चांस नहीं देना है. फीमेल में उन फीमेल्स को ही देना है. लाइक फीमेल में भी जो 100 में randomness नहीं रहेगी. But then you have decided the quota. So everybody do not have equal chances of selection. Now 75, even within 75, you do not give the equal chances to everyone. You will ask from only those people to whom you think either they give responses or they may volunteer. आपने सिर्फ उनसे पूछा जिनको देख के आपको लग रहा था कि ये रिस्पॉन्स देंगे, सिर्फ उनको ही क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट किया. To whom you feel like ये रिस्पॉन्स नहीं देंगे, you did not ask. So that's why in quota, non-probability. Convenience sampling, widely used, but बहुत बार questionable है कि आपने convenience sampling क्यों use करी. So when we have to use convenience sampling, this is non-probability kind of sampling. First, it should be used at the time of pilot study. जब आप pilot study करें, better to go for convenience sampling. Or if the population is too large, you cannot visit to each and everyone, then it is better to go for convenience sampling. Just an example. Convenience क्या example है? Let's say I have to take interview of people, of investment, individual investors. मुझे जो कानपुर है, कानपुर के लोगों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखना है. अब कैसे करें, किससे डेटा कलेक्ट करें? सो व्हाट आई सेड, ओके मेरे पास वाले अंकल, बिकॉज शी इज दिस फैमिली लुक reside near to me, so I just visit to their house and take the data. So this is called convenience sampling. कोई randomness नहीं है. One more sampling we use, that is called snowball. Now somebody tell me what is snowball sampling. When we collect from the respondent, then the name of another respondent is उसका भी जो नाम होता है वो भी हम उसी रिस्पोंडेंट के थ्रू लेते जाते हैं. मतलब चेन जाता है जिसके थ्रू हम रिस्पोंडेंट से ही रिस्पोंडेंट को जोड़ते जाते हैं और उनसे अनदर रिस्पोंडेंट का जो डेटा होता है, ये नाम होता है, उसको हम पता कर लेते हैं.
So though it is again a convenience sampling, snowball भी convenience sampling है, but here lead will be given by the respondent only. Like traveler's experience, when you said na traveler experience, so you talk to one traveler and then you can ask to, do you know any other people who visited to the OYO? So they may give you lead. Then you talk to, you take the data from that person, and then again you ask for some references. So likewise, this is snowball sampling. So better आप जहाँ पे convenience sampling use कर रहे हैं, you can also use snowball sampling if possible. So this is one example of the snowball convenience sampling. Here she wanted to take the interview, feedback, what people think about the death penalty. जो लोगों को ये डेथ पेनाल्टी दी जाती है, people लोगों का क्या सोचना है, is it good or is it bad, should it be stopped? ये बहुत बीच में it was such a big question कि should the death penalty be exercised or not, and everybody was opposed कि भगवान ने जन्म दिया है तो जो जीवन लेने का हक है वो भी भगवान के पास होना चाहिए, something like that in news. So there is this is one journalist, and she wanted to take the response. She wanted to see what the public think. So convenience sampling is what? She is standing just in front of her window and she saw, oh, somebody is going. Somebody is walking. She said, okay, he is approachable. ये बहुत पास में. So she just asked, okay, please tell me, do you believe in the death penalty? So this is what? Convenience. No judgment, nothing, because he is conveniently available. That's why she is asking. Better to use judgmental. अगर आप non probability sampling use कर रहे हैं, better rather to write convenience, you can use judgmental sampling, because convenience, it is criticized many times. That's why we said it should be used for only pilot study. Judgmental means when you can give some judgment. Why I am choosing this person? That person may be the expert of that particular area. Investment analysis कर रहे हैं, इनसे क्यों पूछा? Because that person is above age of 18. Only he can do investment. Why not asking to the student? Because the student do not have income. That's why only I'm talking to the salaried people. So this is purposely what called judgmental. तो आप convenience मत लिखो, आप इसको judgmental कर सकते हो. मैंने उनसे क्यों पूछा? Because वो earn कर रहे हैं. That's why. Panel sampling, time series data जहाँ भी होगा. If you have to take the data for 10 years, 13 years, 14 years, then it is called panel sampling. And this is my last slide. I guess 3 o'clock हो गया है. So any question from your side? I'm so sorry, I'm just running out 10 more minutes. It is just because हमने थोड़ा सा session 10 minute late start किया था. So if you have any question, or you may write my mail, it is, let me write. So if you have any question, anytime you can ask, no problem.